Believe you can and you are halfway there by Roosevelt. So what you need is you have to believe in yourself that you can do a particular thing. And if you believe in yourself, things are going to be easy for you. These things are going to be very easy for you. This thing is going to motivate you to go further, to be consistent in your efforts. And if you are putting efforts consistently, then things are definitely going to be in your favor. So we were talking about Haryana Public Service Commission. We are already done with one part. In this we will finish the notification. This is the second part. You can watch the previous part जिसमें हमने dates वगैरह देखा था. 1/12/2023 से applications will be live till 21/12/23. हमने eligibility थोड़ी सी बात की थी, कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, ये सब हमने बात किया था. वैकेंसीज कितनी किसकी हैं एंड few more things, abbreviations जो पोस्ट हैं about them. 11/2/2024 is the rate of prelims. then about the marks एंड परसेंटेज जो है क्राइटेरिया कि आपको क्वालिफाइंग है CSAT 33%, वो हमने देखा. एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या, दैट ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन तो 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. इसको अच्छे से देखने के लिए यू कैन वॉच दी फर्स्ट पार्ट, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है अबाउट दिस पैटर्न ABCD and E. and all the questions are compulsory. Anyhow you have to attempt E option. अगर आप नहीं attempt कर रहे हैं in detail you can watch that first part so things will be clear for you. इसमें we'll start with note 3. now कितने candidates लिए जाएंगे इससे? 12 times the number of advertised post. if 100 post के लिए है तो 1200, ठीक है, 12 टाइम्स जितना ही पोस्ट के लिए है. नाउ द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड स्कैन्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स. किसका? डेट ऑफ बर्थ, SC, जो भी आपके EWS, क्रीमी वगैरह जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है. सर्टिफिकेट शुड बी इशूड अकॉर्डिंग टू हरियाणा गवर्नमेंट, जो भी इनका फॉर्मेट रहता है, एंड डेटेड 17/11/21 to 22/3/22. The EWS certificate must show the annual income of family less than 6 lakhs 2019 वाले के हिसाब से, ठीक है. नाउ 17/11/21 ये डेट्स भी आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, बिकॉज दे शुड नॉट हैपन कि आप अपना 2017-15 का एक बार जो लाइफ में बनवा है आप वही लेके पहुंच रहे हो, राइट. थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू अगर आप ऐसा करेंगे, पुराना ले आएंगे. नाउ मेंस 4 papers, paper 1, 2, 3 and 4, English, essay, Hindi, Devanagari script, including essay, your GS and optional subject. now यहाँ पे optional subject हम देख लेते हैं briefly. agriculture, animal husbandry, veterinary science, anthro, botany, chemistry, engineering, then commerce and accountancy, economics, practical engineering, English literature, geology, geography, Hindi literature in Devanagari script, Indian history, law, mathematics, management, mechanical engineering, medical science, physics, philosophy, PS and IR, political science and international relation, psychology, PubAd, Punjabi literature, statistics, sociology, Sanskrit, zoology. बस, okay. So these are the subjects. now the candidates are directed to select one option subject of the above 29 option subject in which they want to appear in the mains at the time of filling the application form. now if you see here मेंस की हम बात करें तो एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सही है. सिविल्स में नंबर ऑफ पेपर जो है वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, ओके. बट जो हमने देखा वैकेंसी एंड पोस्ट, सो कट ऑफ इज गोइंग टू बी हाई. नाउ लिस्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विद देयर कोड्स. मेंस जो भी कोड्स वगैरह हैं उनके, जो अभी इतना यूज़ का नहीं है. मेंस रिटन एग्जामिनेशन shall comprise of 4 papers जो हमने देखे. essay type 3 hours duration each.
General knowledge and other things you can pause and read if you want to, otherwise अभी इन चीज़ों का there is no use. Now no candidate shall be called for the personality test or your interview अगर at least 45% marks in the aggregate of all written papers and a score of minimum 33% marks each in Hindi, in देवनागरी एंड इंग्लिश. जो आपका इंग्लिश हिंदी है इनमें आपका 33 रहना चाहिए और एग्रीगेट 45% सारे रिटर्न का, बट 33% इसमें इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग 33 आपका होना चाहिए. इफ़ यू आर एमिंग, क्या सिलेक्शन की भी बात नहीं कर रहा, इफ़ यू आर एमिंग कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे, पर्सनैलिटी टेस्ट. ओके, nothing that important, but still as I said you can pause and read if you want to read everything. Now coming to this 75 marks किसका, your personal interview candidates thrice the number of advertised post, 100 है तो into 300, ठीक है, जो देंगे इंटरव्यू in order of merit in the main written examination will be called for personal interview. जो भी होगा आपके मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे. प्रीलिम्स वाला खत्म, प्रीलिम्स से आप आए मेंस, मेंस से फिर आगे बोर्ड. he she will be asked questions on matters of general interest. The objective of the interview is to assess the suitability of the candidate for a career in public service. ठीक है, सेम स्टोरी जो आपने मूवीज, TVF का एस्पिरेंट्स एंड और गंगा जल बहुत सारी सीरीज में आपने देखी होंगी किस टाइप का पर्सनालिटी चाहिए. So for finding that kind of a person, things were given. Now the final selection shall be based on the merit list to be prepared on the basis of the total marks obtained by the candidate. जो भी आपके total marks है किसमें, means and your personal interview out of 675 marks. Keeping in view the preference of service, जो भी आप preferences भरेंगे वो भी आपको इसलिए सही से ध्यान से भरनी है. Exercising of preference of service. A candidate may apply for appointment to all or any of the services post online as advertised by the commission will be considered for service post he applies. ठीक है, preference वगैरह these are the post जो भी हैं हमने स्टार्टिंग में भी देखा when we were talking about the vacancies. Okay, eligibility की बात करें, सो फॉर एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट बी इधर इंडियन सिटीजन, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम टू इंडिया का 1 जनवरी 1962 से पहले विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली यहाँ पे सेटल होने के. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम. ओके, अब मैं आई डोंट थिंक सो आप में से कोई इधर है जो मेरा देख रहा होगा ये वीडियो, सो देयर इज नो यूज, बट स्टिल नोटिफिकेशन में गिवन है तो वैसे तो हम बहुत चीज़ें नहीं देख रहे हैं, बट स्टिल लेट्स सी सम ऑफ द थिंग्स. नाउ एलिजिबिलिटी एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ DSP शुड नॉट बी लेस देन 18 years एंड नॉट मोर देन 42 एज. ठीक है, कब से 1/1/2023 की बात हो रही है ये, इसको ध्यान में रखते हुए एज कैलकुलेट. For the post of DSP, candidate should not be less than 18 years and not more than 27. Now, जो रहता है आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह, हमने जो अभी भी एज देखी वो दैट कैन ऑल्सो चेंज. जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ये उससे पहले का नोटिफिकेशन है, सो देयर आर चांसेस कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस टाइम कुछ चीज़ों में चेंज आ जाए. Now schedule class 5 years, backward classes 5 years and different relaxation जो भी है 5 years disabled person who are covered under rights of person with disability act. ठीक है, subject to maximum 52 years. Military person who are disabled while in military service 5 years. Widowed or legally divorced 5 years. Judicially separated
women residing separately for more than 2 years from the date as prescribed for the purpose of age for the applicants of other categories. 5 years. ठीक है. Ex serviceman, emergency commissioned officers, so different categories which you can read. Basic age criteria you have seen 42 years तक. DSP 5 years to SC ST, tribe, backward class and EWS. Physical standard for DSP is as under: male, female, 5'7", that is 170.18 centimeters or 1.7 meters. ठीक है. 1.7 meters हो, ये कैसे हो गया? ठीक है, 100 होता है ना, तो 1.7 meters और 1.57 meters. 5'2", 5 feet 2 inches, chest 33, then expansion के साथ 34 and half, it is 7.63 centimeters और 0.87 meters. ये भी फॉर्म में पूछा जाता है. ओके, योर चेस्ट का एक्सपेंशन, सो यू शुड बी अवेयर, वरना यू कैन यूज द इंच टेप. वो नहीं है तो यू कैन यूज योर स्केल. स्केल को कैसे यूज करें? एक रोप यूज करो, रोप से ऐसे आके यहाँ चेक करो, फिर रोप को स्केल पे रख के यू कैन मेजर. दैट इज कॉल्ड जुगाड़. पर लेजेंड पीपल व्हाट दे विल डू इज, विदाउट measuring anything, they'll write something more, any random number which is more than the eligibility. A lot of candidates are like this only. So different thing, a lot of things are there in this. Now certificate by the candidate belonging to economically weaker section of Haryana. The candidates belonging to EWS category of Haryana are required to attach necessary certificate. किसके हिसाब से? हरियाणा गवर्नमेंट जो भी है इस वाला डेटेड. ठीक है, कहाँ पे? cs.haryana.gov.in इस पे है, उसके हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर आपका EWS का. वैलिड फॉर द ईयर 23-24, शोइंग इनकम कितना? 6 लाख से कम. मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से आपका लिया जाएगा एज. ठीक है, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट. ऑल्दो मेट्रिकुलेशन ही मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यूज़ किया जाता है. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स मस्ट possess a bachelor degree in arts, science, commerce or an equivalent degree from a recognized university. कब? 21/12/23 क्लोजिंग डेट तक आपको चाहिए. ठीक है, क्या आपका जो भी डिग्री है. कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट दे आर इन पोजीशन ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स. जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जिसका डेट किससे पहले हो, आपके क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन उससे पहले हो. कुछ जगह रहता है कि ज्वाइनिंग से पहले, बट यहाँ पे है क्लोजिंग डेट से पहले. सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस. 21/12/23 से पहले के आपके होने चाहिए सर्टिफिकेट्स. एप्लीकेशन फी फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 1000. ठीक है. For male candidates of backward class belonging to creamy layer, for male candidates of general and all reserved category of other states. Now for all female candidates of general category including female dependent of ESM of Haryana only 250. बाकी और जो भी जनरल फीमेल कैंडिडेट्स हैं और रिजर्व कैंडिडेट दूसरे स्टेट 250. दैट इज 1/4,000 का. For male and female candidates of SC, backward class, BCA, BCB, ESM and economically weaker section of Haryana कितना 250. For all persons with disabilities category candidates with at least 40% disability है हरियाणा के, तो कुछ नहीं. To encourage them, right? Now, if you will not be refunded those candidates who did not appear in the preliminary exam. सर मैं एग्जाम देने नहीं गया था, मेरा फीस पैसा वापस दो. सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. ओके, नाउ ऑल ऑफ दैट रिलेवेंट थिंग, अगर एक बार दे दी वापस नहीं मिलेगी. ठीक है,
तभी दे रहे हैं। हाउ टू अप्लाई, स्टार्टिंग में हमने देखा व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई एवरीथिंग, तब हमने देखा था स्टार्टिंग में पार्ट 1 में क्या, hpsc.gov.in। ठीक है, not important, the candidates are advised to fill their application forms carefully। जो भी आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, आपका आधार वगैरह, परिवार पहचान पता नंबर, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके गलत भर दिया था तो कुछ हो नहीं सकता फिर आगे। यू हैव टू सिट एंड राइट in that particular subject only। Okay, all the candidates including PH candidates have to submit scanned copy of duly signed application form after checking of their particulars। No change will be allowed and no request for change of any particulars in the application form। As I said, आपका जो option वगैरह भी है वो भी you have to be careful when you are filling the form। Name, mail ID, date of birth। The candidate must take printout of their finally submitted online application form and retain a copy। जो हर application में लिखा रहता है, although most of the candidates don't do this। Regarding no objection certificate by the employer, अगर आप काम कर रहे हैं किसमें, स्टेट वगैरह गवर्नमेंट में, तो you need NOC, self declaration of such government employees is required to be submitted to the effect that employee is not facing any disciplinary proceedings। Again same thing, and then any government service under any government, quasi government organization and PSUs after submission of application and has executed a bond will have to produce no objection certificate NOC from the employer on or before the date of his interview से पहले। यहाँ पे क्लोजिंग का नहीं है, इंटरव्यू से पहले। Now scribe related things, okay, you can read। Now scribe का भी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज गिवन। The students who have recently passed entrance exam in the same year in which the exam is being conducted are also eligible to act as scribe। However, only those scribes would be allowed whose particulars are duly verified by principal of the school in which the student is studying or has recently passed। Letterhead along with the passport size photo of the scribe duly attested। 20 minutes extra per hour जो रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, जितना ही परसेंटेज का होना चाहिए, डिसेबिलिटी, एवरीथिंग। अब अगर कुछ आपका गिल्टी है, इलीगल रैटिफिकेशन, अप्लाइंग प्रेशर ऑन ब्लैकमेलिंग वगैरह, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ओके, इनमें से कुछ नहीं करना है, वो सब चीज़ें हैं। Violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificate permitted them to take the examination। Now, correspondence with the commission will not enter into correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases। Okay, बाकी कोई भी डाउट है, you can use the mail ID as well as the phone number। Same thing जो रहता है प्रीलिम एग्जामिनेशन, एक बार स्क्रीनिंग है, ऐसा नहीं है आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो विल से नाउ आई वांट मनी बॉक्स भर के आई वांट मनी। प्रिलिमिनरी इज जस्ट अ स्क्रीनिंग। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव मेंस, देन इंटरव्यू, देन योर मेरिट, देन you will join, then you will work, and then salary। Okay, so long journey। Now again same thing, जो भी आगे कम्युनिकेशन होगा किससे, नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जो मेक श्योर कि सब सही हो। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन बी गिवन ओनली टू SC BC जो भी चीज़ें हैं, कैटेगरी कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट। इट इज क्लैरिफाइड दैट स्टेट government has decided to specify the
Criteria for exclusion of person with the backward class is creamy layer regarding reservation and service and admission. ठीक है, बोली हरियाणा स्टेट के लिए है ये. So you can apply if you are not living in Haryana but as a general candidate, उसी में आपका काउंट होगा. Thanks. Now reservation for freedom fighters, awards and everything. Ex-serviceman. The details, as I said, you can read if you want to. Also, this copy you will find on the Telegram channel of High Spirited Human. So on this Telegram channel, you will find this PDF as well as PDF related to IB, AFCAT. अभी छत्तीसगढ़ का भी आया है क्या, PCS एंड जो भी और नोटिफिकेशंस आते हैं. For that you can join this Telegram channel. So, and for current affairs and for various examination needs, you can follow the channel. You can comment or talk to me using Telegram. अगर आपको कुछ भी और पूछना है या जानना है. फाइनली हम दौड़ते भागते पहुंच गए हैं सेक्रेटरी तक. ओके, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला घूमने के लिए अच्छा है. आफ्टर सिलेक्शन यू कैन विजिट. ओके, जोक्स अपार्ट. सो this is the withdrawal application. No request for withdrawal of candidature received from any candidate after she has submitted application will be entertained under any circumstances. तभी भरो जब आप दे रहे हो, और अगर भर दिया नहीं देना है तो भी you don't need to withdraw, right? Okay, so in first part also we have seen all of these things. Okay, so that's it. Stay tuned and thanks for watching.